torch of the end, you can say. ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆଜି ପଢ଼ିବା ପିଲେ ଲେଟ୍ ମି ଟ୍ରାଏ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଟୁଡେ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଛେ, ପଲିଟିକାଲ ବି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛେ, ଏବେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ 4th ୟୁନିଟ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଡିର। So when I decided to go abroad for further studies, the unit start like this. When I decided to go abroad for further studies, उच्च शिक्षा पाई बा अन्यत्र पढ़िबा पाई जेतेबेले मु निष्पत्ति नेली फॉरेन कंट्री को जीवा पाई, विदेश को जीवा पाई, अब्रोड कहले विदेश कहले विदेश जीवा पाई। I was sure my grandmother would be upset. मु माने I was sure मु निश्चित थिली जे मो ग्रैंडमदर निश्चित भावे दुखी हो। She would be upset. I would be away for 5 years. I would be away for 5 years and I was going there for 5 years. ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ନାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। And at her age one could never tell. And ତାର ଯୋଉ ବୟସ ଥିଲା ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତ nobody can tell, କିଏ କହିପାରିବନି କି କ'ଣ ହବ ନାହିଁ। But my grandmother could. But my grandmother was a different person, was a different lady from mother lady. So more grandmother ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ତାର କିଛି ହବ ନାହିଁ। What happened? She was not even sentimental. She was means my grandmother was not even sentimental. टिके भी मन दुख भी नथिला तार, ता मनरे टिके भी कष्ट नथिला, से इमोशनल नथिला बिल्कुल। शी वाज नॉट सेंटिमेंटल एट ऑल। मु जाउची मो नाती टोका जाउची, मोर बयस हे गरानी, मु के माने मला बेलु को मो नाती टोका को देखि परिबिनी, ए भला किछि भी चिंता नथिला तार। गेटिंग मी? So she was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but didn't talk or show any emotion. She came to show me off at the railway station but didn't show any emotion. से मते छाड़िबा पाई स्टेशन को आसिला, प्लेटफॉर्म को आसिला के मोर जेजेमा, किंतु ता मनरे कोनोसी प्रकार भावना, कोनोसी प्रकार इमोशन नथिला से समय कि जेमती आमे जेतबेले पो झियो माने जानती बाहर को बापा माई इवन इफ कांदी पकांती, बट से जगह रे कोनोसी इमोशनल जिंस नथिला। तार फेशियल एक्सप्रेशन जणा पड़तला दैट शी वाज not at all any sentiment or nothing was there. Her lips moved in prayer. सही समय भी से प्रार्थना रे मज्जी जाई थिला, moved in prayer. Her mind was lost in prayer. She was just lost in prayer. से भावना प्रार्थना राज्य रे हजी जाई थिला, से भगवान को प्रेम रे मज्जी जाई थिला से समय रे। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. तार अंगूठी माला गड़ेबार व्यस्त थिला। Beads of rosary. Silently she kissed my forehead. Silently she kissed my forehead. चुपचाप मते मो कपाल रे से एक चुंबन देला। आम जानिथिबा जेतबेले नातु नातुनी जानती जेजेमा जेजे बापा माने सेमान को गेलो करंती, तो से गेलो सूचक ताको से कोन कला, से गोटे किस कला। एंड व्हेन आई लेफ्ट, मु जेतबेले छाडिली से जगह बाहर ले ट्रेन रे गली होला, I cherish the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. I cherished the most imprint. से जो ओदालिया स्पर्शटा मु मोर स्मृति देश रे साहित्य के रखिली। मोस्ट इम्प्रिंट कहले से ओदालिया चिन्ह, तार जे ओठर चिन्ह, से ओठर स्पर्शटा मो पाखे रहिला। से स्मृति हिसाब रे मोर भावना थिला जे मु या परे जेजेमा को देखी पारे न देखी पारे किछि कुहा जाई परिबनी, एटा होछि तार शेष स्पर्श मो पाई। बट दैट वाज नॉट सो। आई वाज रॉन्ग। दैट वाज नॉट सो। हैं एमती किछि भी हेला नाही, नथिंग एंड हैपेंड लाइक दिस व्हाटएवर आई वाज थिंकिंग। मु जहा भाबुथिली सेमती किछि भी हेला नाही। ओके आई बट दैट वाज नॉट सो। After 5 years I came back. 5 वर्ष पर मु फेरिली।
आफ्टर 5 years आई केम बैक 5 वर्ष पर मु फेरिली कौटू विदेश रु कौन करी मु पाठ पढ़ा सारी I came back home and was met by her at the station and was met by her at the station रे से पूरी थरे मते नवा पाई आस्थिला there was no change at all she was the same as I had seen जेमती मु देखिथिली से सेही भली ही थिला there was no change she still had no time for words and she didn't look a day older she didn't look a day older गोटे दिन भी अधिका ताकू हैला बळिया मते लागु नथिला 5 वर्ष तळे मु जेमती देखिथिली she was just like that she still had no time for words she still had no time for words 5 वर्ष पर नाती आउची खुशी हे जीवा कथा कथा हवा कथा भलो होचुकरी नाती पाठ पढा केमती हैला एबेला किछि but no she had no time for words तापर पखरे कथा हवा पई समय नथिला no time for words and you know and while she clasped me in her arms while she clasped me से जतबे मते हक कला in her arms ता हाथ रे जाबुडी की धरिला while she clasped me clasp कहले कोन बिले हक करबा जाबुडी की धरिबा in her arms I could hear her reciting her prayer I could hear her reciting her prayer मु सुनी पारुथली तार से प्रार्थनार शब्द से जो धीरे धीरे प्रार्थना कहतला हरे कृष्ण 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 or something else whatever ताकू मु सुनी पारुथली I was able to hear prayer even on the first day of my arrival even on the first day of my arrival मोर पहुंचीवार जो प्रथम दिन थिला the first day of my arrival what happens her happiest moments were with her sparrows who she had fed longer and with frivolous rebuke कहले कोन frivolous कहले मीठा मीठा गाली rebuke कहले गाली frivolous rebuke कहले मीठा मीठा गाली माने मजा मजा रे गाली दबा तो सेही दिन भी नाती गोटे आईची बाहरु नाती सहित टिके कथा हवा कथा टाइम टिके स्पेंड करवा कथा पचारी बुझिवा कथा बट स्टिल didn't happen anything एमती किछि भी हला नहीं the happiest hour of the day was the same से दिन से घर चटिया मान को बहुत लंबा समय धरिके खुएला आ से मान को गाली दे खुओतला से दिन से with frivolous rebuke in the evening संध्या आसीगला जो दिन अथरा आसते से दिन कथा in the evening संध्या रे a change came over her ता भीतर किछि गोटे परिवर्तन आसीला गोटे छोटिया परिवर्तन कौन से परिवर्तन she didn't pray for the first time in my life I've seen my grandmother didn't pray she didn't pray से कांदिला से दिन प्रार्थना कला नहीं then she collected the women of the neighborhood then what did she do then she collected the women of the neighborhood पड़ोसी नेबर कहले पड़ोसी हम समस्त जानिथिबा नेबरहुड कहले प्रतिवेशी जो माने अछंती से घर घर स्त्री मान को से डाकिला कलेक्टेड का संग्रह करबा कहले कोन ये कोली हेची जे गोटे गोटे की संग्रह डाकिला से मान को एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम गोटे पुराना ढोलो आनिला ढोलो बाजा बजामती देखिथिबा हम समस्त ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग गीत गाइबा आरंभ कला फर्स्ट टाइम गीत गाइबा आरंभ कला टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स आउ गोटे टिके अधे नुह फॉर सेवरल आवर्स किछि घंटा चलिला जिनसडा she thumbed the sagging skin of the dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors so what did she sing की प्रकार गीत गाइले से she thumbed the sagging skin thumbed कहले बाडेबा sagging skin कहले से माने फटा ड्रम फटा ढोलर चमड़ा सब थुड़ थुड़ होउतला चमड़ा धुड़ धुड़ चमड़ा सो सेगिंग स्किन ऑफ द डाइलापिडेटेड कहले जीर्ण शीर्ण डाइलापिडेटेड DILAPIDATED डाइलापिडेटेड कहले जीर्ण शीर्ण ड्रम एंड sang of the homecoming of warriors योद्धा माने जेतेबेले घर को आसिले जो स्वागत संगीत योद्धा मानकर घर को आसीबा खुशी रे जो ओढा गीत गांती सेही भलिया गीत से दिन गाउतला और ड्रम बजे कि कोन करतला
She was dancing there. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. We try to persuade कहले कौन मनैवा, परसुएट कहले मनैवा, आमे ताकू मनैवा पई चेष्टा कलु, आमे निवृत्त करिबा पई चेष्टा कलु कोन पई टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कारण से जो बयस रे थिला परिणत बयस रे थिला ओवर स्ट्रेन हे जीवार चांस थिला avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she didn't pray. And for the first time, as the author had already told, that past 20 years he had known her. And for the last 20 years, she had never seen him, stop praying. But that was the first time. That was the first time. What happens? She didn't pray. So the next morning, she was taken ill. The next morning, paravarti dinare, the next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go. So it was a mild fever. डॉक्टर कौन कहले एटा माइल्ड फीवर, सामान्य ज्वर होइछि हैं, इट वाज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, एटा छाड़ी जीवो. बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, but her intention was different. My grandmother's intention was different. She thought differently. सी थॉट डिफरेंटली. से गोटे अलग चिंता, से गोटे अलग प्रकार लड़ी थिला, तार चिंताधारा किसी अलग थिला. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, एंड माय ग्रैंडमदर टोल्ड अस, से निजे कहला दैट हर एंड वाज नियर, दैट आई विल नॉट लिव एनी मोर, मु आउ बंचीबी नाही, मोर शेष समय हो गला. किए कहला पिले? द ग्रैंडमदर. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had committed to pray. Se auri कहला जे I have only a few hours left, and those few hours I want to use those few hours in praying God. भगवान को प्रार्थना करिकी मोर जो कई घंटा समय मो पाखे जो कई घंटा समय अच्छी, मु जो कई घंटा बंचीबी, ए कई घंटार उपयुक्त उपयोग करी मु भगवान को प्रार्थना करी. सो डोंट डिस्टर्ब मी. एक कथा किए कहला पिले? दिस आर द वर्ड्स ऑफ द ग्रैंडमदर. जेजेमा कहले कथा काहाकू? परिवार समस्त को. So committed to pray, and she was not going to waste any time taking to us. She was not going to waste any more time taking to us. कौनसी से माने चाहू नथिले कि से तांकर गोटे भी मुहूर्त को से नष्ट करिवे. आम मानक सहित कथा ही करी से गोटे भी मुहूर्त समय नष्ट करबा पई चाहू नथिले. She doesn't want at all to waste a moment of her precious time that was left for her. So we protested, all the family members. We stand for all the family members. We protested. आमे समस्त विरोध कलु. माँ तोर शेष समय तू आम सहित टिके कथा हो. आमे समस्त विरोध करुथुलु तार से कथा को. But she ignored our protest. She ignored कहले कौन पिले? अणदेखा करदवा. She ignored our protest. आमर कहार कथा से सुनिला नहीं. She ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed. तार से सज्जा रे से शांति रे सोई गला. सोई की से तार माला गड़ो उठाए, भगवान को जप कर उठाए. So her beads, even before we could suspect, आमे संदेह करिवा पूर्वरु
इवेन एपरिकी आम सन्देह करने पूर्व इवेन वी कुड सस्पेक्ट her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. What happens? You know, her lips stopped moving. तार ओठो बंद हो गला. She जो prayer करुतला तार ओठो बंद हो गला. And one more thing had happened. The rosary fell from her lifeless finger. तार से निर्जीव हाथरू कौन पहुँची पिले? तार जपमाला टा पड़ी जाइए. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor, एक फिका रंग शांतिर रंग तार मुहरे छाई गला एवं आमे जानिलु that से आउ नहीं से मर जाइछि. So now the after death, tradition will be there. We lifted her off the bed and as is customary, आम समस्ते जानी जिते किए जना मृत हो जाती से बेड उपर रखा जाए ना तलू को निया जाए. सो आम लिफ्ट अप कलु उठेलु बेड रु तले शुदेलु कारण यहाँ आम कस्टम अच्छी प्रथार अच्छी परंपरार अच्छी. लेड हर ऑन द ग्राउंड तले शुदेलु and covered her with a red shroud. गोटे लाल कपड़ा ताकू कवर कर दिया गला as it is customary tradition स्वरूप है. red shroud. After a few hours of mourning कहले कौन पिले MOURN शोक व्यक्त करिबा. MOURN मन कहले शोक व्यक्त करिबा. After a few hours of mourning we left her alone to make arrangement for her funeral. Funeral कहले शव यात्रा. FUNERAL फ्यूनरल कहले शव यात्रा. तो आमे तार बॉडी को छाड़ी देकी शव यात्रा पाई प्रस्तुत करिबा पाई गलु. किछि समय शोक व्यक्त कला परे क्रंदन कला परे. इन द इवनिंग संध्या ही गला बिले. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. In the evening sandhyare what happens, we went to her room. आमे तार कोठरी की गलु तार डेड बॉडी जोटी पड़ी थिला. We went to her room with a crude stretcher. Crude stretcher कहले कोन पिले कोकेई कंचा बाउंस रे तयारी कोकेई. कंचा बाउंस रे तयारी कोकेई. Crude stretcher to take her to be cremated. To take her to be cremated. क्रिमेटेड कहले कौन पिले श्मशान को नहीं पड़ा समाधि दबा. सो जो धर्म रे जहा करा जाए क्रिमेशन ग्राउंड कहले समाधि स्थल जोठी दाह संस्कार करा जाए से स्थल को कहा जाए. So the sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्यास्तर समय सूर्य पश्चिम आकाश रे अस्त हवा पाई जाउचंती. ए समय सूर्यंकर गोल्डन किरण सुनेली किरण रूम रे भर्ती है कि सुनार भ्रम सृष्टि करुछि ने. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. So we stopped halfway in the courtyard. We stopped halfway in the courtyard. courtyard कहले veranda अगणा. अगणार अधारे आमे रही गलु ता रूम पर्यंत आमे जाई पारिलु नाही. व्हाट इज द रीजन? कारणटा कोन थिला पिले? All over the veranda and in our room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. So, what happens then? Look at this. All over the veranda, pura baranda shara, and in her room, tar kothori bhitare madhya, room right up to where she lay dead, right up to where she lay dead, जोठी से सोईची से पर्यंत अगणा ठारू तार रूम पर्यंत तार बेड पर्यंत dead and stiff, wrapped in the red shroud, wrapped in the red shroud,
से लाल कनारे गोड़े होकर से जो पड़ी से पर्यंत थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड इन द फ्लोर हजार हजार घर चटिया थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड सैट कहले बसी स्कैटर्ड इतस्तत भाव चारिआडे प्रसारित होगी घर चटिया माने एकाध लय बसते सेठी scattered on the floor. There was no chirruping at all. There was no chirruping at all. There was no a single sound was being made by the sparrows as they were mourning the dead grandmother. सते कि सेमाने भी कौन करते पिले शोक संतप्त थिले सेमाने शोक प्रकाश करिवा पई आस्थिले जेजेमार मृत्यु सेमाने भी दुखी थिले. We know bird has no emotion, but can don't have emotion like us, but still look at the attachment of birds and the grandmother. So there was no chirping. We felt sorry for the birds. सेई समय हमको दुख लागिला से पक्षी मानक पाई हमको दुख लागिला. We felt sorry for the birds. My mother fetched some bread for them. मो माँ कौन कले किसी ब्रेड आनिले जाइकिर भितर से मान को दबा पे किसी ब्रेड आनिले कारण से माने जेतबले माने काले से घर चटिया माने जेजेमार ब्रेड को अपेक्षा करिचंती सेई जिंस भाबिकरी मो माँ जाइकिरी किसी ब्रेड आनिले से मान को दबा पे ब्रेड फॉर देम. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स छोट छोट टुकड़ा करके मोर जेजेमा जमती दौला वे माय ग्रैंडमदर यूज टू सेमती छोट छोट टुकड़ा करके छोट छोट टुकड़ा करके से मन को दिया गला. मो जेजेमा जमती दौला सेमती ही दिया गला. यूज टू एंड थ्रू इट टू देम से मन को दिया गला. थ्रू इट टू देम. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. घर चटिया माने से ब्रेड को नोटिस ही कले नहीं. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडफादर्स कॉप्स ऑफ. कैरिड ऑफ कले उठेइबा पिले ओ एफ एफ कैरिड ऑफ मोई नबा उठेइबा. सो व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर कॉर्प्स CORPS corpse कहले डेड बॉडी मृत शरीर डेड बॉडी. कॉप्स स्टैंड फॉर डेड बॉडी. So grandmother coughs up. They flew away quietly. नीरव उड़ी गले. There was also no chirruping. While the birds started flying, there was no chirruping at all. No chirruping. Next morning, परवर्ती दिन सकाळे next morning, the sweeper झाड़ू वाला आसिकरी the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. कौन कला से जो रुटी खंड सब पड़ी थिला से रुटी खंड जो दिया है से रुटी खंड सबको स्वीप करदेला झाड़ू करदेला नहीं कि डस्टबिन रे यस मैथ्स बाय बिंबा नहीं कि पकईदेला. सो दैट्स ऑल. आज ये आसंता काली बाकी जो रहा क्वेश्चन आंसर सेशन टा टोटल 4टा यूनिट क्वेश्चन आंसर सेशन को डिस्कशन करवा. सी यू देयर. स्टे ट्यून्ड मास्टर इंग्लिश. बाय.